فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। ज़िंदगी के पहले चिल्ले में, पहली मजलिस में आदमी जितना सीखता है उतने 10वें 5वें चिल्ले में क्यों नहीं सीखता है? इसलिए कि उसकी तलब का मिजाज ख़त्म हो जाता है। Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil kareem. Amma ba'd. Honorable Hazrat Mufti Sahib is saying that when a person goes out in the path of Allah, for example, for 40 days for the first time in his life, how much that person learns, subhanallah. Why that person doesn't learn the same amount when that person goes for 40 days for the 5th or the 6th time? The reason is because the talab that was in his heart the first time is not existing in his heart when he goes the 5th or the 6th time. मेरे दोस्तों, अल्लाह के नेक बंदे जब किसी अल्लाह वाले के पास जाते थे तो सदका देते और दुआ करते कि ए अल्लाह, मैं जिसके पास जा रहा हूँ उसके ऐब मुझे मत बतलाइए, मेरे ऐब मुझ पर खोल दीजिए। When the pious people of the past, when they used to go to visit a pious person and sit in his company, then first they would give some sadaqah. And then they would make dua to Allah that, oh Allah, I'm going to this pious person. Do not open the defects and the faults of this person to me. Rather open up my own faults to myself. शेखुल हदीस मौलाना यूनुस साहब जौनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह की मजलिस के बारे में कि उनकी मजलिस में सिर्फ ज़िक्र खैर होता था, ज़िक्र गैर नहीं होता था। Maulana Yunus Jaunpuri rahmatullah alayhi, he mentions about the majlis of Maulana Abul Hassan Ali Nadwi rahmatullah alayhi, that in his majalis there would be only the talk of goodness, but there was no talk of anyone backbiting or talking about against anybody. It was only good things about others, no bad thing about others. मेरी दीनी बहनों, इस मुबारक काम में बहुत डरने की बात है। हम गश्तों में जाते हैं, जमातों में जाते हैं तो लोगों के ऐब हमारे सामने आते रहते हैं। तो जैसे डॉक्टर हर मरीज़ को देखने के बाद अपने हाथों को धोता है, वैसे हर मुलाकात, हर इख्तिलात के बाद अपने दिल को ज़िक्र से धोना चाहिए। When we are doing the effort, mashallah, of da'wat ilallah, we go for gasht, we visit many people, we interact with a lot of people, then it is an effort where we have to have an element of fear also. That it should not be that by visiting the people, then I start to look at the faults of others. That should not happen. So therefore, just like the doctor, after he sees the patient, he washes his hand. Just like that, after visiting the people, doing ikhtilat and mixing with the people for the sake of deen, then we have to wash our hearts with the dhikr of Allah subhanahu wa ta'ala. जान और माल की कुर्बानी बहुत आसान है, जज्बात और राय की कुर्बानी बहुत मुश्किल है। To sacrifice one's wealth and one's life is very easy. But to sacrifice one's emotions and passion and to sacrifice one's own opinion, that is very difficult. इंसानों से फरिश्तों वाली उम्मीद नहीं करना चाहिए। We should never have expectations from a human being like the expectation we have from an angel. ये बात हमें कभी नहीं भूलना चाहिए। चिल्ला 4 महीने मस्तूरात के इज्तिमाआत
मस्तूरात में निकलना, तालीम के हलक़े, ये सब डोल और रस्सी की तरह है। असल तो पानी तक पहुंचना है। ये सारे वसाइल हैं, मकसद ये है कि शरीयत ज़िंदगी में आ जाए। We should always keep in mind that going for 3 days, 40 days, going in the weekly ijtima of the masturat, etc., etc. All these are the means to attain the objective. Like you have the rope and the bucket. The objective is through that rope and the bucket, we want to get the water. Just like that, the objective is how 100% Sharia and the Deen of Allah subhanahu wa ta'ala can come alive in my life. आप इस मेहनत को अल्लाह का रास्ता कहते हैं। डैलेस का रास्ता आपने कहा 4 घंटे से ड्राइव चल रही है, 5 घंटे से चल रही है। कब आएगा, कब आएगा? आदमी की तवज्जो होती है, साइन बोर्ड्स देखते रहता है, माइलस्टोन देखते रहता है। अल्लाह के रास्ते में 10 साल से चल रहा हूँ, 20 साल से चल रहा हूँ, 30 साल से चल रहा हूँ, फिर अल्लाह मुझे मिला या नहीं मिला? तन्हाइयों में मिला नहीं मिला, सजदों में मिला नहीं मिला। We call this the effort, the path of Allah, Sabilillah, the path of Allah subhanahu wa ta'ala. What does that mean? When we say that this is the path of Dallas, which means that ultimately this path will lead to Dallas. On the way to Dallas, we see the signs, and we see the billboards, the signs to see how far Dallas is, how many miles left for Dallas to come. Likewise, when we are in the path of Allah, then ultimately the goal is to reach Allah. Did we attain Allah or not? Did we find Allah in our sujood or not? Did we find Allah Ta'ala in our salat or not? That is a question we have to ask ourselves. खाली नक़्ल हरकत, सिर्फ नक़्ल हरकत मकसूद नहीं है सिफ़ात के बग़ैर। Just to strive and move in the path of Allah without qualities, that is not the objective. चक्की जब चलती है, चावल डालकर पीसते हैं तो चावल मिलते हैं, गेहूं डालकर पीसते हैं तो गेहूं का आटा मिलता है। खाली चक्की चलती है तो आवाज़ तो बहुत आती है, मिलता कुछ नहीं है। When you put something in the grinder, then, for example, you put rice in the grinder, then grinded rice will come out. You put wheat in the grinder, then grinded wheat will come out. But if you don't put anything in the grinder, it will just make noise, but nothing will come out. अगर हमारी अल्लाह के रास्ते में चलने वाली बहनें इल्म के साथ चलेंगी, ज़िक्र के साथ चलेंगी, हुस्न मुआशरत के साथ चलेंगी, तो यही सिफ़ात इलाक़ों में मुंतकिल होंगी। MashaAllah, when we go and we move in the path of Allah subhanahu wa ta'ala, if we will move with sifat and qualities, we will move with dhikr, we will move with ilm, and we will move with good akhlaq and husnul muashara, then all these qualities, they will spread in the localities that we go into. जो अपनी ज़ात के लिए कर रहा है वो हर हाल में जमेगा, जो दूसरों के लिए कर रहा है वो आज नहीं तो कल छोड़ देगा। The one who makes effort for his own benefit, then he will continue to do the effort until he dies. But the one who does the effort for the benefit of others, then a time will come where he may end up stopping and leaving the effort. दूसरा अगर काम से जुड़ जाए तब भी वो छोड़ देगा, दूसरा ना जुड़े तब भी वो छोड़ देगा। If someone else, others, they join the effort, they come close to Allah, he will still continue, he will not continue, he may end up leaving. And if somebody does not join, he still may end up leaving. इस्तिकामत तो हर काम में सिर्फ इखलास वालों को मिलती है। Istiqamat in the effort, only those who have ikhlas and sincerity, only they acquire the istiqamat. बहुत अच्छी मिसाल याद आई। एक अल्लाह वाले ने देखा कि शिकार करने वाले कुत्ते को हिरन के पीछे छोड़ दिया। वो कुत्ता दौड़ के जा रहा है हिरन के पीछे, लेकिन हिरन उस कुत्ते को नहीं मिली। पूछा कि भाई क्यों नहीं मिली? तो उन्होंने कहा कि कुत्ते का दौड़ना अपने मालिक को दिखाने के लिए था और हिरन का दौड़ना अपनी जान को बचाने के लिए था। तो जिसकी दौड़ अपनी जान बचाने के लिए है,
जिसकी दौड़ अपने आप को फितनों से महफूज रखने के लिए है, वो दाएं बाएं मालिक का देखना न देखना, साथियों का करना न करना उसकी तबीयत पर असर नहीं करेगा। One time, a hunter, he released his dog after a deer. So finally, the dog was running, but could not catch up to the deer. So then the question was asked to him that why the dog did not catch the deer. The deer ran away. He replied very beautifully. He said, because the dog was running in order to impress his master, but the deer was running to save its life. So the one who runs and does the effort to save himself from the fitnas, to save himself from the disobedience of Allah, then this person will continue to run no matter what happens. He will not look at who's looking at me, who's not looking at me, who's appreciating me. No. He's running for his life. So he will continue to do the work of deen. मामलात बिगड़ते हैं तो लुक़मा नापाक होता है, मुआशरत बिगड़ती है तो दिल टूट जाते हैं, और लुक़मे का नापाक होना ये भी दुआ की कबूलियत को रोकता है, और दिलों का बिखरा हुआ होना ये भी दुआ की कबूलियत को रोकता है। When business transactions become corrupt, then the food that we eat, then that food becomes impure. And when muashara becomes corrupt, social dealings with each other, social life with one another, associations with one another, that becomes corrupt, then the hearts start to break. And the food becoming impure also is a means of our du'as not being accepted, and the hearts breaking, that also is a means of du'as not being accepted. माशरे की हर खातून को, माँ को भी जानना है, बीवी को भी जानना है, बहनों को भी जानना है, भाइयों को भी जानना है कि हमारी लिमिट्स क्या है, राइट्स के साथ लिमिट्स क्या है। अगर हम नहीं जानेंगे तो हर गाड़ी अपनी लाइन में नहीं चलेगी, अपनी लाइन से बाहर निकल जाएगी। तो दो गाड़ियां भी एक सड़क पर नहीं चल सकती हैं अगर लाइन में ना हो। So in our social life, we must know everybody, that what is their status, what is their position. We must know who the mother is, we must know who the wife is, we must know who the sister is, we must know who the brother is. So we must identify that person, and we must know what their rights are and what the limits are. Right? Because a person who does not know the boundaries, then, my dear respected brothers, this will not be able to continue. Even two cars which are, in other words, in the same line, but are not, in other words, in their appropriate place, then the cars will not be able to move it properly. पुरानापन दिनों के गुजरने से नहीं होता, सिफात के हासिल करने से होता है। A person does not become a senior or an old worker just because he spends a lot of time or a lot of time passes, he becomes elderly and a senior. No, a person attains seniority and becomes an old worker and a person of respect through sifat and qualities. एक बादशाह ने ऐलान किया ज़मीन पर लकीर मारकर कि इसको छेड़े और मिटाए बगैर छोटा करना है। इसको छेड़ना भी नहीं है, मिटाना भी नहीं है, छोटा करना है। तो समझदार वजीर ने उसके बाजू बड़ी लकीर मार दी। आप अपने किरदार को ऊंचा करके, आप अपने अखलाक को ऊंचा करके मदऊ के दिल को जीतिए। So there was a king, so he drew a small line on the ground. And then he said, without touching this line and without erasing this line, make this line small. So his minister was very intelligent. So right next to this line, he drew a bigger line. So as soon as he drew the bigger line, then this line became small, without touching it, without erasing it. Likewise, honorable mothers and sisters, make our akhlaq and make our behavior and the way we carry out ourselves, make it very high, so that automatically we win the hearts of others.
अगर हम अपनी औलाद को वक्त देने के लिए तैयार नहीं हैं तो दूसरा आपकी औलाद के लिए वक्त देने क्यों तैयार होगा? If we are not ready to give time to our own children, then why would someone else be ready to give time to our children? आपने जब सही मोहल्ले और सही मुल्क का इंतखाब ही नहीं किया तो औलाद की तरबियत का इरादा कहाँ किया है? When you have not selected the correct locality and the correct country for the tarbiyat of the awlad, then what expectation, hope is there that you have made the intention to upbring and nurture your children in the proper way? नौकरी और स्टेटस को देखकर मकान का इंतखाब किया है, मस्जिद, मकतब, उलमा, काम को देखकर मकान का इंतखाब नहीं किया. Allahu Akbar. Most of the time we find that the people have selected their house based on their status and based on their job. They have not based or purchased their house or built a house based on the masjid and the ulama and the company and the environment that is in that locality. माँ बाप अगर अपनी तरबियत के बग़ैर बच्चों की तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद हैं तो ये पागलों की जन्नत के सिवा और कुछ नहीं है. If the parents are concerned about the tarbiyah and the upbringing of their children without rectifying themselves and without trying to make their own tarbiyah, then they are living in a fool's paradise. सिर्फ एक वाक़या सुनाता हूँ. मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह इतने बड़े आदमी हैं, आप जानते हैं. एक मर्तबा उन्होंने अपनी बच्ची से नसीहत करने में कुछ सख्त बोल दिए. बाद में से एहसास हुआ, माजूरी हो चुकी थी. हजरत ने बच्ची को बुलाया, बेटी को बुलाया और ये कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे, मैंने तुझसे सख्त बोल कहा. बच्ची ने कहा कि अब्बू जी आप तो आप हैं, आप नहीं बोलेंगे कौन बोलेगा? कहा नहीं बेटा, मुझे अगर 60% गर्मी के साथ बोलना चाहिए था, मैंने 70% बोल दिया. ऐसा करो, मेरी तसल्ली के लिए कह दो कि तुमने माफ़ कर दिया. उन माँ बाप से औलाद की तरबियत होती है जो अपनी तरबियत के बारे में फ़िक्रमंद होते हैं. One beautiful incident, Hazrat Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi, one time he was speaking to his daughter, and while speaking to her, he spoke one harsh sentence to her. He spoke a little bit harshly while rebuking her. Later on he realized that, you know what, I spoke too harsh. I should not have spoke like that. So he called his daughter and said, oh my daughter, I spoke harsh to you, please forgive me. The daughter replied that you are my father, you are you, you are you. If you don't speak harsh to me, then who will rectify me, who will rebuke me? You have the right to do that. He said, that's fine, but if I was supposed to speak harshly to you, for example, 60%, then I perhaps spoke to you harshly 70%. I did more than what I was supposed to do. So for my own contentment and satisfaction, please say with your tongue that you have forgiven me. Honorable mothers and sisters, the parents who are concerned about their own tarbiyah, they are the ones who will be able to do the tarbiyah of their children. मौलाना उमर साहब पालनपुरी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे, जो रोज़ी की जिम्मेदारी अल्लाह ने ली है उसका गम हमें खाए जा रहा है, और जो तरबियत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमें दी है उसके बारे में हम बेफिक्र हैं. Umar Palanpuri Sahib Rahmatullah used to say that which Allah took responsibility of, that to provide rizq and sustenance to us, we are working day and night to acquire that. Although Allah has taken it upon Himself to provide. And that which Allah has not taken responsibility, which is the tarbiyah of our children, we have to do it ourselves. With regards to that, we are completely negligent and careless. पीर जुल्फ़कार साहब फरमाते हैं कि पिटाई करने वाला अपनी शिकस्त और हार मान रहा है कि मैं ये बात ज़बान से नहीं समझा सकता. Pir Zulfiqar Sahib Damat Barakatuh, he mentions that the one who is beating and physically hitting for the purpose of tarbiyah, then he has acknowledged his own defeat. That I have not been able to accomplish this with my tongue,
I have failed in accomplishing the tarbiyah with my tongue, therefore I have to resort to hitting. हम कहते हैं कि नरमी बहुत करके देख ली, अब सख्ती ही करना पड़ेगा। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन युहरमिर रिफ़्क़ा युहरमिल खैरा कुल्लहु। Unfortunately, we say that we've already tried softness. We've already tried being kind. Now let's try harshness. He said, whereas Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam has said, whoever is deprived of softness and kindness, he is deprived of all good. उस्ताद का इंतखाब होना चाहिए, अपनी औलाद को किसी अल्लाह वाले के हवाले करना चाहिए। हिफ्ज़ कराना सिर्फ काफ़ी नहीं है जब तक कि आगे के पूरे मशवरे उसके उस्ताद के ज़रिए से ना हो। We have to choose the appropriate teacher for our children. We have to choose. Not just that we have made him become a hafiz and that's it, handed over for him to hifz. No. We have to choose the appropriate teacher. Let our children sit in the company of the pious and the people of Allah and make mashwara with them in each and every step with regards to our children's education. सच बोलने पर 1 घंटे की तकरीर से ज़्यादा लड़के के बच्चे का, लड़के के बाप का, लड़के की माँ का झूठ बोलने की जगह पर सच बोलना 1 घंटे की तकरीर से ज़्यादा असरअंदाज होता है। Giving 1 hour lecture on speaking truth, being honest. Speaking 1 hour, giving a 1 hour lecture on honesty. More effective than that is that the mother or the father, where they had the opportunity of speaking a lie, instead of speaking the lie, they spoke the truth. That action of theirs, that honesty that they displayed, is more effective than that 1 hour speech with regards to honesty. चीज़ों के टूटने पर कितना नाराज़ होते हैं, अल्लाह के हुक्म के टूटने पर कितना नाराज़ होते हैं। सुभान अल्लाह। हदीस पाक में है, अपनी खादिमाओं को बर्तन के टूटने पर ना मारो, बर्तन की भी एक उम्र होती है जैसे तुम्हारी उम्र होती है। When something breaks, how angry we get with our children. Oh, you broke this. But when they break the command of Allah, how angry do we get? In one hadith it is mentioned that do not get upset with your servant when he or she breaks something, because just like a human being has a lifespan, just like that every item also has a specific lifespan. When that thing broke, that thing had to break and the lifespan was over. सारी डिग्रियां सिखलाई बेटियों को, ससुराल में रहने का सलीका नहीं सिखलाया, वो अपनी ज़िंदगी में नाकाम ही रहेगी। We have taught our daughter every degree. We have given her the access to acquire every degree. But we have not taught her how to be a wife and how to be a daughter-in-law when she is with the in-laws. Then we have not given her the ingredients of success. She will be a failure the rest of her life. 1000 मशीनें चलाना सिखलाया, किचन संभालना नहीं सिखलाया, तो अपने शोहर और बच्चों को बाजारी खाने से नहीं बचा सकती। We have taught her how to use and how to access so many machines, gadgets, but we have not taught her how to use the kitchen properly, how to cook, etc. in the kitchen. So this type of woman, this type of wife will not be able to protect her husband and her family from the restaurant and outside food. जो घर अपने सोने जागने के औकात को मुतय्यन नहीं कर सकता, वो घर कभी दीन पर आ नहीं सकता। That house that does not have enough discipline to stipulate a bedtime, then that house will never be able to come onto the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. 1 महीना बजट चलाने का काम बच्चे को दीजिए, 1 महीना 1 हफ्ता किचन संभालने की जिम्मेदारी बेटियों को दीजिए, ताकि जिम्मेदारियां जब उन पर पड़ें तो वो आसानी से पूरी कर सके। Train the children. For example, 1 month give the responsibility to the son to manage the expenses in the budget.
1 month, give responsibility to the daughter that this month you have to manage the kitchen. Until we don't put responsibility on them, until then they will not be able to learn and assume the responsibility. आदमी या तो ज़िंदगी में नसीहत से सीखता है या हादसे से सीखता है, लेकिन आजकल इतनी बेहिसी हो गई कि शोहर बदल गए, बीवियां बदल गई, हादसे हो गए, लेकिन फिर भी सीखने के लिए तैयार नहीं. Man either learns through advice or through problems. When a problem comes, then they learn, either through advice or through problems. Unfortunately, today we have become so numb. We have become so senseless, so numb, that how many problems are happening? Marital problems are happening. Women have changed, men have changed, husband has changed, wife has changed, but still we are not taking the effect and we are not taking lesson from this. चल सकता. आज तक दुनिया लाइफ स्टेटस, हाई प्रोफाइल, मेयार ज़िंदगी की कोई सही तारीफ नहीं कर सकी. दुनिया का जो सबसे बड़ा मालदार है वो भी अपने माल को बढ़ाने और बचाने के गम में है. Even the most wealthiest person in the world, he is still not satisfied, and he is also in the effort, in the pursuit of increasing his wealth. We don't find that any person is satisfied with his livelihood. इतना रखा है कि 3 साल बैठकर खा सकता है, इतना रखा है कि और 60 साल जी ले तो बैठकर खा सकता है, लेकिन उसके बावजूद भी दीन की मेहनतों में और अपने अल्लाह से ताल्लुक़ के लिए वक्त देने तैयार नहीं है. This man has so much savings that he can sit down and not work for the next 3 years, sometimes for the next 60 years, one entire generation. But still we find that he's not ready to leave his work and he's not ready to give time to the deen of Allah subhanahu wa ta'ala. अंधे लाड़ ने ही नस्लों को तबाह किया है. मोहब्बत होनी चाहिए, लेकिन अंधा लाड़ ही नस्लों को तबाह करता है. Blind love is that which has destroyed our future generation. Yes, we should love, but not blind love, that we are not looking at the well-being of our children. 2 वाक़े सुनाता हूँ बस. हज़रत अली मियाँ नदवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, यतीम बच्चा है, बेवा माँ है, बाप का इंतकाल हो गया. मैं इशा की नमाज़ पढ़े बगैर सो जाता, माँ मुझे उठाती, नहीं बेटा इशा पढ़ लो पहले. अगर मैं किसी नौकरानी से बदतमीज़ी करता तो माँ मुझसे नाराज़ हो जाती. जब तक तुम माफ़ी नहीं चाहोगे मैं तुमसे बात नहीं करूँगी. अली मियाँ नदवी. Maulana Abul Hasan Ali Nadwi rahmatullah used to say that if I would not be able to wake up for Salatul Fajr for Salah, then she would wake me up. And my mother did such tarbiyah that if I disrespected any of the servants, then my mother would be very upset at me. एक साहब ने मदरसे में जाकर अपने बच्चे से मुलाकात की तो देखा कि कपड़े मैले हैं और वो गंदी हालत में है. तो उन्होंने कहा कि मैं अपने इस हालत में बच्चे को नहीं रख सकती, लेकर आ गई. उस माँ का डायलिसिस में इंतकाल हुआ और डायलिसिस की हालत में भी वो बच्चा परेशान कर रहा था. कितना बुरा दिन था जिस दिन उस माँ ने उस बच्चे को मदरसे से निकाल दिया. Hazrat Mufti Sahib is giving an example of blind love. That one mother, she went to visit her son when he was in a madrasa. And obviously we know in madrasa, the life is a little bit difficult. Not always they have an opportunity to wash their clothes, etc. So she saw that my son has clothes, they're not very clean, a little bit dirty. So she said, oh, my son is here, I should take him back home. So she took him out from madrasa. And she disenrolled him from the madrasa. The biggest wrong and the wrong decision she has made, that such was the child when he grew older, that this mother ultimately she passed away because of dialysis. And even on the day when she's passing away, she was the son was causing her pain and difficulty. So Hazrat Mufti Sahib is saying the big mistake that she made was to take out her son from the madrasa because of this blind love.
समझदार माएँ कैसी होती हैं? बेटी से मिलने के लिए ससुराल गई तो बेटी को देखा कि कपड़े धोकर घर की सफाई करके बिल्कुल पसीने से शराबोर है। तो माँ ने कहा, वाह बेटा, ऐसे दिल जीता जाता है, ससुराल ऐसे आबाद किया जाता है। और बेटे आपने तो कुछ नहीं किया, आपकी सास तो कुएं से पानी लाती थी, उखली में पीसती थी। कुर्बानी का ऊंचा मकाम बताती हैं जो माएँ, तो वो अपनी नस्लों को वाक़अतन सही रुख पर डालती हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने साहबा से यही कहा, ऊंचा मकाम बताया और कुर्बानी का। तुम्हारे साथ क्या हुआ? तुमसे पहले वालों को तो कंघी से, आरे से काट दिया जाता था, आग में फेंक दिया जाता था। अजीमत और कुर्बानी का ऊंचा मकाम बता दिया ताकि उनकी कुर्बानी उनकी निगाहों में उस वक्त छोटी नजर आ जाए। What is a very intelligent mother like? When she goes and visits her daughter, and the daughter is living with the in-laws, and she sees that, mashallah, the daughter has washed the clothing of everyone, and she has done the domestic work, and she is drowning in her own sweat. She is so tired that she says to the daughter that, mashallah, this is how you win the hearts of others. This is how you win the hearts of others. And then she tells the daughter that, don't worry, this more than this your mother-in-law has done when she was young. She did much more than this. She had to go outside of the house and with her own hands go far to get water and draw the water from the well, etc., etc. So this is the way of tarbiyah, to tell the people of the sacrifices of those who did more than you. This is how Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to do tarbiyah of Sahaba, that, oh Sahaba, what sacrifices have you done? How people of the past, their skins, subhanallah, their skins used to be ripped while they were alive with the scissors, with iron scissors, they used to be skinned alive, subhanallah. So the Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam used to tarbiyah to show them that the sacrifice that others have are more than you, so that the sacrifice will continue to increase. तरबियत की बहुत किस्में हैं बात के लिए। Okay, take it slow. Okay, slow. नहीं, ये माइक अभी वो बैटरी खत्म हो रही है तो वो ठीक, मैं दे दूंगा, ठीक। तरबियत की बहुत सी किस्में हैं मेरे भाई। जिनसी तरबियत, बढ़ती उम्र में बच्चों को किन बातों की तरफ तवज्जो दिलाना चाहिए, उसको लव मैरिज के नुकसानात खुलकर बताए जाए, उबलने वाले जज्बात को किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, खुलकर बताया जाए। ये जिनसी तरबियत है। There are different levels of tarbiyah and upbringing. One is the tarbiyah with regards to their gender, because as a male, as a female, there are emotions and feelings that a person has naturally for the opposite gender. So this type of tarbiyah is very important for our children. Openly, when they reach a certain age, openly talk to them about the harms of love marriages, about the harms of engaging in this type of haram. So openly talking to them about these topics of tarbiyah with regard to their gender and with regard to their emotions, this is very important. इंतज़ामी तरबियत, तुम्हें दोस्तों के साथ कैसे रहना चाहिए, तुम्हें अपने दूसरे रिश्तेदारों के साथ कैसे रहना चाहिए, मुलाजमत की जगह पर कैसे रहना चाहिए, आमदनी खर्च का तरीक़ा क्या होना चाहिए, ताजिर हो तो मुलाजिमों के साथ बर्ताओ, सास बन जाओ तो बहुओं के साथ, बहू बन जाओ तो सास के साथ। इंतज़ामी तरबियत का एक लंबा बाब है जो हमें सिखाने की ज़रूरत है। Then we have the tarbiyah in terms of the administrative issues. For example, with your friends, how you have to be. If you are a businessman, how you have to be with your customer. If the child is working somewhere, then how you have to be with your employer. How you have to deal with others. All of this is also important in terms of tarbiyah. इल्मी तरबियत, घर में कुतुब खाने क्यों नहीं है? इल्मी तरबियत, कितने बयान लिखवाए अपने बच्चे से, कितनी मर्तबा खुलासे पूछे अपने उस्ताद के सबक के। इल्मी तरबियत, मुताले का माहौल,
मसाइल की तहकीक, रमज़ान से पहले रमज़ान का दीन, ज़कात से पहले ज़कात का दीन, हर पहलू पर इल्मी तरबियत एक मुस्तकिल बाब है सीखने का. The next is ilmi tarbiyat. Tarbiyat in terms of the ilm. Do we really have a library at home for our children? Have we ever asked them to write notes of a bayan that they have listened to? Have we ever asked them the gist and the summary of the dars and the lesson that they learned from their teacher? So like this, the desire to research, the desire to do mutala, the desire to read beneficial books. Have we developed the ilmi tarbiyat in our children? मुआशरती तरबियत, समाजी ज़िंदगी में कैसा रहे. अखलाक का सबसे छोटा दर्जा है कि मेरे ज़रिए से किसी को तकलीफ़ ना पहुँचे. सबसे आला दर्जा है मेरे ज़रिए से सबको फ़ायदा पहुँचे. मुफ्ती शफ़ी साहब रहमतुल्लाह अलैह ने तक़ी उस्मानी साहब दाऊद बरकातुहुम को देखा कि वॉशरूम में जाके आए और थोड़े से नजासत का हिस्सा वहाँ पर बाकी रह गया. तो हज़रत ने बुलाकर कहा कि तक़ी, समझते हो तुमने हराम किया, अपने बाद वाले को यहाँ पर नजासत छोड़कर तुमने तकलीफ़ दी. हज़रत मिक़दाद बिन मादी करब रदी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब घर में दाखिल होते तो सलाम की आवाज़ इतनी नपी तुली होती कि सोने वालों की नींद ख़राब ना होती, जागने वाला सलाम का जवाब दे देता. ये दो मिसालें हैं. ये है समाजी ज़िंदगी की तरबियत, मुआशरती ज़िंदगी की तरबियत. इयादत के लिए ले जाइए, बीमारों की इयादत कैसे की जाती है, जनाजा नहलाइए, ताज़ियत कीजिए, मुआशरती तरबियत. जायज़ नाजायज़ दावतों के अहकाम बतलाइए, ये मुआशरती तरबियत. And now tarbiyah with regards to the social life, social dealings with others. For example, the lowest level of good character is that through me no one should be harmed. And the highest level of akhlaq and character is that through me everybody should benefit. One time Mufti Shafi Sahib Rahmatullah Alayhi did tarbiyah of his son, Mufti Taqi Sahib, when he was small. He had used the bathroom and he left without flushing it properly. So some of the najasat was still remaining. So when Mufti Shafi Sahib saw this, he said to his son, you have done haram. You have caused harm and pain to someone. The one who comes after you to use the bathroom, imagine what type of taklif he will experience, what type of pain he will experience, and when he was inconvenienced, he will experience when he sees this. Another example is Sahabi narrates that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, when he would enter the house, then he would enter the house in such a way, and he would say salam in such a way that those who were sleeping would not wake up, and those who were awake would be able to hear the salam. So this is muasharati tarbiyah, tarbiyah in terms of social life. Take them to visit the sick also, and tell them the method of visiting the sick. Take them to wash the janaza also. Teach them how to do the washing of the janaza, etc. हयातुस सहाबा में वाक़या है. हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा के पास एक कीमती जोड़ा था. एक ही जोड़ा था, पूरे मदीना में पहनते थे सारी दुल्हनें. तो वो जोड़ा पहनकर थोड़ा सा वो मुरस रही थी, इतरा रही थी, अपने आप में थी. हज़रत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि आयशा, इस वक्त रब की निगाहें तुमसे हटी हुई हैं. तो हज़रत आयशा रदी अल्लाह अन्हा ने फरमाया कि या रसूलल्लाह, मैंने ये सदका दे दिया अल्लाह के रास्ते में. तो तब आका ने फरमाया कि हो सकता है उसकी तरफ से तलाफ़ी हो जाए. ये मुआशरती तरबियत. कौन सा कपड़ा पहना रहे हम, कौन सा कपड़ा पहनकर बता रहे हम, हमें देखना चाहिए. Also, the tarbiyah of even the libas and the clothing. One time Aisha Ta'ala, she wore a certain type of dress, and it was a very nice type of dress. So she wore it, and to some extent she was getting the pride and she was getting the feeling of superiority after wearing that clothing. So Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saw her, and he said that at this moment when you have pride over your clothing, then at this point Allah Ta'ala's gaze of love is moved away from you. Immediately Aisha gave that dress away in sadaqah. Then Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said that perhaps because of your giving away in sadaqah, maybe the compensation of that has been made. Maybe Allah Ta'ala has forgiven you for that.
सुनाते हुए शर्म भी आती है। अपने अकाबिर की ज़िंदगियाँ हम में और अकाबिर में क्या निस्बत है। हज़रत शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह बहुत छोटे थे। मौलाना यहिया साहब कांधलवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी अहलिया से कहा कि मैं ज़करिया को कल पैसे देने वाला हूँ, तुम उसके सामने अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फ़ज़ाइल सुनाना। मैं पैसे देने वाला हूँ, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने के फ़ज़ाइल सुनाना, ताकि वो अल्लाह के रास्ते में खर्च करे। कैसी निगरानी की जाती थी। Hazrat Mufti Sahib is saying that I feel shy to even talk about the stories of our elders and mashayikh, that who are we to even speak about them, subhanallah. They were such. Maulana Zakaria rahmatullah alayhi Shaykh al-Hadith, he was very young, he was a boy at this time. His father, Maulana Yahya rahmatullah alayhi, he said to his wife, the mother of Maulana Zakaria, that, you know what, I'm going to give him some money. But when I give him some money, you have to give him the fazail and the virtues of spending in the path of Allah. So when I give, you have to give him the encouragement to spend in the path of Allah. Let's see what he does. This is the type of supervision, nigrani, tarbiyah that they used to do to their children. एक मरतबा बहुत नाराज़ हो रहे थे मौलाना ज़करिया साहब रहमतुल्लाह अलैह अपनी दुकान के खादिम पर। आखिर तुझे कितना माफ़ करूं, आखिर कितना बर्दाश्त करूं। मौलाना ज़करिया साहब फरमा रहे थे। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह मौलाना ज़करिया साहब के चचा वहाँ बैठे हुए थे। फरमाया कि ज़करिया इसको इतना माफ़ कर जितना अपने को अल्लाह के यहाँ माफ़ करवाना हो। One time Maulana Zakaria rahmatullah was getting upset at one of his workers, that how many times should I forgive you? Always making mistakes. So Maulana Ilyas rahmatullah alayhi, who was the uncle of Maulana Zakaria rahmatullah alayhi, he was sitting there. He said, "Oh Zakaria, how many times you want Allah to forgive you? That's how many times you must forgive him also." तारीख़ी तरबियत, हिंदुस्तान की तारीख़ क्या है, जिस मुल्क में है उस मुल्क की तारीख़ क्या है, उस मुल्क में आपके बड़ों ने क्या किया, उस मुल्क में दुश्मनों ने क्या किया, तारीख़ी तरबियत होनी चाहिए। Even tarbiyah in terms of history, historical facts, the country that you live in. For example, India, what the elders and the mashayikh did to preserve the deen in that country, what the enemies of Islam did to harm Islam in that country, the history of one's country, that is also very important. Historical facts, that is also tarbiyah of the children. मिल्ली मसाइल, आलमी मसाइल की तरबियत, क्या हो रहा है मेरे मुल्क में, क्या हो रहा है पूरे आलम में। हज़रत अली मियां नदवी रहमतुल्लाह अलैह के घर में चूल्हा जलता नहीं था, खाना पकता नहीं था। जब उन्हें पता चलता कि मिस्र के फलाने बड़े आलिम को सूली पर चढ़ा दिया गया, मुल्की और मिल्ली मसाइल का गम बेहिस न रहे आदमी। मुसलमानों के अहवाल, इंसानों के अहवाल दुनिया के दूसरे कोनों में सुनकर, दूसरे इलाकों में सुनकर। Also, we should do tarbiyah of our children in terms of what is happening around the globe, what is happening in the country, what is happening around the world. Our children should not be numb. They should not be senseless. That the sense and the feelings have gone. There's no emotions anymore. It should not be like that. We should tell them what is happening around the world, how many of the Muslims are suffering, so that they feel that pain. Maulana Abul Hasan al-Nadwi rahmatullah alayhi, when he used to find out that a scholar in Misr was given the punishment, death penalty, he was hung, then that day he would not burn fire in the house to cook also. They should show and express the sadness and the sorrow of what is happening around the world to the Muslims. So we should not become numb and lose our sense and lose our feelings. Rather, we should share this with our children so that they also have those feelings. This is also a tarbiyah that we must do with our children. बस खत्म है और वक्त मगरिब भी पढ़ना है। हाँ बस ठीक बस आखिरी बात यही कहूँगा जो एक अल्लाह वाले फरमाया करते थे। हज़रत याकूब भी नबी हैं, उनके वालिद हज़रत इसहाक़ भी नबी हैं, उनके वालिद हज़रत इब्राहीम भी नबी हैं। उसके बावजूद भी उन्होंने हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम नबी और नबी के भाइयों अपनी औलाद से ये नहीं पूछा मा ताबुदून मिन बादी, मा ताकुलून मिन बादी, क्या खाओगे मेरे बाद। खाने का गम नहीं है,
इबादत और दीन पर जीने मरने का गम है। हज़रत याकूब को गम है, हमें कितना गम है। हज़रत इब्राहीम को गम है, वजनुबनी व बनी या अन नअबुदल असनाम, शिर्क से बच जाए मेरी औलाद। हज़रत इब्राहीम को गम है, हमें कितना गम है। तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम मा ताबुदून मिन बादी पर चल रहे हैं या मा ताकुलून मिन बादी पर चल रहे हैं। Hazrat is saying, the last thing I will mention, Yaqub alayhi salam, he is the son of a Nabi, who is the son of a Nabi, his father Ishaq, his father Ibrahim alayhi salam. What type of advice he is giving to his children when he's about to pass away? He asked the question, Yusuf alayhi salam is a Nabi also, and the brothers. So he asked them, Ma ta'buduna min ba'di, what will you worship after me? That is his concern. Even though he is a Nabi, son of a Nabi, and his grandson of a Nabi, still he is concerned about his children, that what will you worship after me? He's worried about their ibadat, he's worried about their worship, their deen. He didn't ask, Ma ta'kuluna min ba'di, what will you eat after me? Even we find Ibrahim alayhi salam is concerned about his children. He's making dua, وَجُنُوبْنِي وَبَنِيَّ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ. Oh Allah, save me and save my children from worshipping idols. So we now have to introspect into our lives to see whether we are following the pattern of مَا تَأْكُلُونَ مِن بَعْدِي, or we are following the lifestyle of مَا تَعْبُدُونَ مِن بَعْدِي. Subhanallah bihamdihi. Jazakumullah khair. Subhanallah bihamdihi, subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilayk. It's already Maghrib time. If the sisters would like to pray Maghrib here.